Hello everyone, good morning and welcome to the online platform of Drishti IAS. So this is the Drishti learning app on which you are having the live online course for UGC NET paper 2, that is for political science. And myself, I'm Girish Venkatesh, and I have been teaching you political science, that is the paper 2 for political science, and we are into unit 7. I said you this is the most lengthiest unit in the entire syllabus, that is out of the 10 units ये सबसे lengthiest unit है. So that's why I did say you that we have to do it in a very proper manner. And if you look at the PYQs last year questions, तो unit 7 जो है वो बहुत important है. And in the last class yesterday, we were doing the constitutional amendments. हम लोग 42nd constitutional amendment तक हम लोग पहुंच गए थे. That is the mini constitution which is being said as, और ये 42nd constitutional amendment act, that is 1976 तक हम लोग इसमें basically पहुंच गए थे. And पूरा डिस्कशन करके ये पता चला कि 1976 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इन दैट 3 न्यू वर्ड्स दे वर एडेड, दैट इज द प्रियम्बल, द सोशलिस्ट एंड द सेकुलर. मतलब प्रियम्बल में 3 न्यू वर्ड्स ऐड हुए, एंड दैट इज द सोशलिस्ट, सेकुलर एज वेल एज द इंटीग्रिटी. दीज आर द 3 वर्ड्स. प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड किया गया, that is part 4A of the constitution and article 51A to the constitution को add किया गया. Plus the president was bound to the advice of the cabinet. Then part 14A that was also added, which provided for the administrative tribunals and the tribunals for other matters. Plus जो seats था in the Lok Sabha and state legislative assembly, they were froze on the basis of 1971 census till 2001 elections. And it also made constitutional amendment beyond judicial scrutiny. Plus जो judicial review or writ jurisdiction of the Supreme Court and the High Court, उसको भी तुम्हारा ये curtail किया गया. Plus it also raised the tenure of the Lok Sabha and the state legislative assembly from 5 years to 6 years. ठीक है, and so on. ये सब हम लोगों ने इसको पढ़ा. ठीक है, so today we'll move ahead, not waste any time, and we'll move ahead with the constitutional amendments, and we'll try to finish all the important constitutional amendment acts which have been taken place till now up to date. और इसमें हम लोग अब आते हैं the 43rd constitutional amendment act. 42nd के बाद the next one is the 43rd Constitutional Amendment Act 1977. Now this 43rd Constitutional Amendment Act 1977, देखो it was after the, you can say the, मतलब जब emergency खत्म हो गया इंडिया में, then after this 43rd Constitutional Amendment Act came up, that is in 1977. So whatever were the powers which were curtailed with regard to the Supreme Court and the High Court, and that too with regard to the judicial review as well as the writ jurisdictions, they were all restored. That means this Constitutional Amendment Act 43rd, it restored the jurisdiction of the Supreme Court and the High Court in respect of judicial review as well as the issue of writs. Second, it deprived the Parliament of its special power to make laws to deal with anti-national elements. That means the 42nd Constitutional Amendment Act ने Parliament को power दिया था कि anti-national elements से deal करने के लिए the Parliament, देखो, empowered the Parliament to make laws to deal with anti-national activities, and such law would take precedence over fundamental rights. Fundamental rights के ऊपर ये laws रहेंगे. But what happened in the 43rd Constitutional Amendment Act? Though the right of the Parliament to make laws, ठीक है, that was being deprived. तो इसमें सबसे पहला, I can say you, it restored
the jurisdiction of the Supreme Court and High Court, restored the jurisdiction of the Supreme Court and High Court in respect of judicial review and issue of writs. Judicial review and issue of writs. Second, deprived the parliament of its special power to make laws to deal with anti-national elements. ठीक है, so this is what is there with respect to the 43rd Constitutional Amendment Act. ठीक है, then comes the very famous 44th Constitutional Amendment Act, that is 1978. Now, what are the things that were brought with respect to this? What were the amendments that were made? First, 42nd Constitutional Amendment Act ने tenure of the Lok Sabha and the state legislature को 5 to 6 years तक बढ़ा दिया था. That means it extended the tenure of the Lok Sabha and the Rajya Sabha from 5 to 6 years. But in the 44th Constitutional Amendment Act in 1978, the original term of the Lok Sabha and the Rajya Sabha was restored. That means it restored the original term of the Lok Sabha and the state legislative assemblies, that is for 5 years. Number two, with regard to the quorum that was required in the parliament and the state legislature, that means it restored the provision with regard to the quorum which was required in the parliament and state legislature. Number two. Number three, it omitted the reference of British House of Commons. That means there was the reference of British House of Commons. So it omitted the reference of British House of Commons in the provisions pertaining to privileges. Parliamentary privileges में British House of Commons का reference था, उसको omit किया गया. ठीक है, that is what. Then it gave constitutional protection to the publications in the newspaper of true reports of the proceeding of the parliament. That means any proceedings of the parliament, उसका true report अगर newspaper में publish होता है, then there is no case which can be filed against that newspaper. कोई criminal या civil case नहीं file हो सकता है. So it gave constitutional provisions with regard to that, constitutional protection दिया. Plus it also empowered the president to send back once the advice of the cabinet for reconsideration, but the reconsidered advice is to be तुम्हारा बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. तो इस तरीके से प्लस जो भी पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ले लिए गए थे उसको रिस्टोर किया गया. वेरी इंपॉर्टेंटली एक इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, मतलब इट रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस बाय आर्म्ड रेबेलियन इन रेस्पेक्ट टू नेशनल इमरजेंसी. मतलब नेशनल इमरजेंसी में इंटरनल डिस्टर्बेंस का वर्ड जिक्र किया गया था, उस टर्म को रिप्लेस किया गया by armed rebellion. इसके अलावा it also made president to declare in writing, मतलब written recommendation of the cabinet मिलना चाहिए, then only the president can declare national emergency. So these were certain provisions जो कि 44th Constitutional Amendment Act में लाया गया. So we have to write it with regard to 44th Constitutional Amendment Act. ठीक है, so let's go on with the first point. पहला point है restored
the original term of the Lok Sabha and state legislative assemblies to 5 years. ठीक है. Second, restored the provision with regard to the quorum in the parliament and state legislature. In the parliament and state legislature. Then third, omitted the reference of British House of Commons. Omitted the reference of British House of Commons in the provisions pertaining to in the provisions pertaining to parliamentary privileges. ठीक है, pertaining to parliamentary privileges. ठीक है, this is the third one. Plus fourth one, जो न्यूज़पेपर्स थ्रू प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर को पब्लिश कर रहे थे, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया. ठीक है, दैट इज द फोर्थ वन. गेव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन to publications in the newspaper of true reports of the proceedings of the parliament and state legislature. Parliament as well as state legislature. So the live chat is there. All those who have joined me in this live class, please you can say hello or hi. इस लाइव चैट में आप हेलो और हाई करके लिख के भेज सकते हैं. और लास्ट क्लास का अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज राइट इट ऑन द लाइव चैट सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट्स. वी आर एक्चुअली नाउ टॉकिंग अबाउट द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. और इस 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत सबसे पहला, इट रीस्टोर्ड द ओरिजिनल टर्म ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज टू हाउ मच 5 years. 5 years के लिए ये तुम्हारा फिर से 5 years ले आया गया. दूसरा, रीस्टोर्ड द प्रोविजन विथ रिगार्ड टू व्हाट? कोरम. ठीक है, दैट टू इन द पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट
legislature. इसके अलावा it omitted the reference of the British House of Commons. जो British House of Commons है उसके रेफरेंस को ये ओमिट कर दिया गया, ठीक है, विथ रिगार्ड टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया गया. किसको? इट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, ठीक है, विथ रिगार्ड टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट. द फिफ्थ पॉइंट और द फिफ्थ अमेंडमेंट आई कैन से कि इट एम्पावर्ड the president to send back, it empowered the president to send back once, write it down, empowered the president to send back once the advice of the cabinet for reconsideration. देखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये बोला गया था. हेलो आदर्श, हाउ आर यू? सो टुडे आदर्श हैज जॉइंड एंड others, Adi Mishra and all. How are you all? आदर्श, आपको क्लासेस कैसे लग रहे हैं? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो. सो विथ रिगार्ड टू दिस आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद होगा. इन दैट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इट वाज सेड दैट, मतलब एन अमेंडमेंट वाज मेड दैट द प्रेसिडेंट वाज बाउंड टू द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट. He was bound to the advice of the cabinet. But here what's happening is that the president is empowered to send once, एक बार, कम से कम एक बार वो advice of the cabinet को send back कर सकता है for reconsideration. ठीक है, but the reconsidered advice is binding on the president. Reconsidered advice, it's binding on the president. At least once वो reconsider करने के लिए भेज सकता है, but whatever is the reconsidered advice that needs to be, मतलब it's binding on the president. ठीक है, प्लस सिक्स्थ पार्ट, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर मैं लिख रहा हूं तो आप लोग भी इसको कॉपी कर लिया करो. ठीक है, सिक्स्थ वन, इट्स विथ रिगार्ड टू द ऑर्डिनेंसेस. वी ऑल नो दैट द ऑर्डिनेंसेस दे वर इश्यूड बाय द प्रेसिडेंट, the governor and the administrators with regard to the union territories. So the ordinances needed their matlab satisfaction. तो यहां पे with regard to the ordinance, 44th constitutional amendment act क्या किया? It deleted the provisions, it deleted the provisions which made the satisfaction of the president governor and which made the satisfaction of the president, governor and administrator final in issuing
ordinances. ठीक है? So this very provision that the satisfaction of the president, governor and administrator, और ये administrator with regard to union territories है, they need to be final in issuing ordinances, ये provision को delete किया गया. Then 7th, restored the powers of the Supreme Court and High Court. Supreme Court और High Court के powers को restore किया गया. 8th, very important, replaced the term internal disturbance, replace the term internal disturbances with armed rebellion. Internal disturbance with armed rebellion in respect of national emergency. In respect of national emergency. ठीक है? 9th, made the president declare national emergency, only on the written recommendation of the cabinet. Only on the written recommendation of the cabinet. मतलब अब एक written recommendation cabinet का बहुत जरूरी था. It was very necessary for the president to declare national emergency. ठीक है? 10th, deleted the right to property from the fundamental rights and made it a legal right. ठीक है? राइट टू प्रॉपर्टी को तुम्हारा फंडामेंटल राइट से डिलीट किया गया और उसको तुम्हारा एक लीगल राइट बनाया गया. ठीक है? 11th, provided that fundamental rights guaranteed under Article 20 and Article 21 cannot be suspended during a national emergency. During a national emergency. ठीक है? फंडामेंटल राइट्स जो गारंटीड किया गया है आर्टिकल 20 और 21 के तहत, दे कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी.
ठीक है, और it omitted the provision that took away it omitted the provision that took away the power of the court took away the power of the court to decide election disputes of the president, vice president, speaker and prime minister. ठीक है, मतलब आफ्टर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में द मतलब द इलेक्शन डिस्प्यूट्स विथ रिगार्ड टू द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, they were taken away from the court. That means they were non-justiciable. As a result, it was the parliamentary committee which was going to decide on it. ठीक है, बट ये वाला प्रोविजंस को ओमिट कर दिया गया. सो ओवरऑल जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, अगर 4 पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया था, 4th पॉइंट क्या है? इट एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक वंस द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट फॉर रिकमेंडेशन, बट रिकंसिडर्ड एडवाइस जो था वो बाइंडिंग है ऑन द प्रेसिडेंट. Then it deleted provisions which made the satisfaction of president, governor and administrator final in issuing ordinances. Matlab, with regard to ordinances, now the satisfaction of president, governor and administrator need not to be final. Then restored the powers of the Supreme Court and the High Court, plus replaced term internal disturbances with armed rebellion. ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रेबेलियन टर्म से तुम्हारा रिप्लेस किया गया. इसके अलावा द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ओनली विद द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट, कि रिटन रिकमेंडेशन होना चाहिए कैबिनेट का, तभी जाकर प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकता है नेशनल इमरजेंसी. प्लस इट डिलीटेड राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स एंड मेड इट व्हाट? अ लीगल राइट. एक लीगल राइट बना दिया गया. इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 20 एंड 22 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. एंड इट ऑल्सो ओमिटेड द प्रोविजन दैट टुक अवे द पावर of the court to decide. ठीक है, कोर्ट के पास पावर था कि it could decide election disputes of the president, vice president, speaker and prime minister. So this is what is there. ठीक है, सो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 की बात होती है. देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द 50th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1984. 50th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1984. ठीक है, 50th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1984. ठीक है,
Now, this 50th Constitutional Amendment Act 1984, what it has done, it has empowered the Parliament to restrict the fundamental rights of persons. जो भी fundamental rights है person का, उसको तुम्हारा Parliament restrict कर सकता है, ठीक है? And of persons who are employed in intelligence organizations and in telecommunication systems which are set up by the armed forces. So it is with regard to the curtailment of fundamental rights of persons who are employed in the intelligence organization or in the telecommunication system set up by the armed forces or intelligence organizations. ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं empowered the parliament to restrict the fundamental rights of persons employed in intelligence organizations ठीक है and telecommunication system set up by armed forces and intelligence organization. ठीक है, so this is with regard to the 50th Constitutional Amendment Act. ठीक है, so after 50th we can go with 52nd Constitutional Amendment Act. (1985) 52nd Constitutional Amendment Act 1985. देखो, एक उस समय एक बहुत अच्छा एक कहावत था, आया राम गया राम. Now this was what? This was that the elected members, they were defecting. तो डिफ्लेक्शन को स्टॉप करना और पॉलिटिक्स ऑफ आया राम और गया राम को स्टॉप करने के लिए ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया. और 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, it provided for the disqualification of the members of parliament and state legislatures on grounds of defection. As a result, we can say it added a new 10th schedule. एक नया 10th schedule को add किया which contained the details in this regard. ठीक है, so remember it. This amendment act was brought to stop defection and politics of आया राम गया राम. ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ आया राम गया राम. और इसमें वी कैन से इट प्रोवाइडेड
disqualification of members of parliament and state legislature, member of parliament and state legislatures on grounds of defection. ठीक है, added 10th schedule to the constitution. With this, added 10th schedule to the constitution in this regard. ठीक है, सो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आपका हो गया. ठीक है, देन कम्स द 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. 52nd के बाद इट्स 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987. ठीक है, now this constitutional amendment act, why it is so important? क्यों इतना important है? क्योंकि yes, there was an amendment with regard to the Hindi text of the constitution, and that is, it provided authoritative text of the constitution in Hindi language and gave the same legal sanctity to the Hindi version of the constitution. मतलब authoritative text of the constitution in Hindi language लेकर आया गया, plus same sanctity दिया गया. ठीक है, same legal sanctity was given to the Hindi version of the constitution. So we can say that ये जो था, it provided for the authoritative text of the constitution in Hindi language. ठीक है, दूसरा, provided the same sanctity, मैं बोल सकता हूं, provided the same legal तो हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सेम लीगल सैंटिटी प्रोवाइड किया गया. ठीक है, सो दिस इज द 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. देन कम्स द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989. 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 ये वोटिंग एज को रिड्यूस किया फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स फॉर द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. reduced the voting age from 21 years to 18 years. 21 years to 18 years in the Lok Sabha and state legislative assembly elections. ठीक है, तो ये 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
इसलिए इंपॉर्टेंट है. And 1 year later comes the 65th Constitutional Amendment Act, that is 1990. ठीक है. And ये 65th Constitutional Amendment Act 1990, we can say that this Amendment Act, it provided for the multi-member, it provided for the establishment of multi-member National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribe in place of a single member. पहले एक single member हुआ करता था, that means एक special officer होता था for Scheduled Caste and Scheduled Tribe. तो in place of that, a multi-member commission. ठीक है. So we can say that it provided for the establishment of a multi-member National Commission, multi-member National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribe in place of a special officer for Scheduled Caste and Scheduled Tribe. In place of a special officer for Scheduled Caste and Scheduled Tribe. ठीक है. Then comes, ये कितना है, 65th. Then the very famous is 69th Constitutional Amendment Act 1991. और 69th Constitutional Amendment Act में क्या है? Special status to the Union Territory of Delhi was given, and it was given by designating it as the National Capital Territory of Delhi. Plus, this amendment, it also set up a assembly for Delhi with a 70 member, मतलब creation of a 70 member legislative assembly. और ये भी बोला गया कि इस 70 member legislative assembly में the council of ministers for Delhi will be 7. ठीक है. तो इसीलिए दिल्ली में 7 से ज्यादा council of ministers नहीं होते. This is by the 69th Constitutional Amendment Act, that is designated special status to the Union Territory of Delhi. ठीक है. Designated special status to the Union Territory of Delhi by designing it as the National Capital Territory of Delhi. पहली बात. दूसरा बात, also established या also created a legislative assembly of 70 members. 70 members के legislative assembly भी create किया गया, plus also created a 7-member council of minister
for Delhi. 7-member Council of Minister for Delhi. ठीक है. Then we can come up with the 71st Constitutional Amendment Act 1992, and this 71st Constitutional Amendment Act 1992, it included Konkani, Manipuri, Nepali language in the 8th schedule, और इससे जो total number of languages था वो तुम्हारा 18 हो गया. 15th was Sindhi, I did say you. So we can say included Konkani, Manipuri and Nepali to the 8th schedule. ठीक है. This made the total number of scheduled language to 18. ठीक है. ऐसे तो 22 है, तो अभी 18 तक पहुंचे हैं, 4 और ऐड होगा अभी. ठीक है. So this is the 71st Constitutional Amendment Act. Now 71st के बाद in 1992 there was the 73rd Constitutional Amendment Act. सबको पता है 73rd Constitutional Amendment Act में क्या हुआ था? It gave constitutional protection and status to पंचायती राज institutions, और इसके लिए एक new part, that is part 9, it was added and it was entitled as the Panchayats. एक new schedule, that is the 11th schedule, that was also added and it contained 29 functional items. ठीक है. तो ये चीज है. तो इसमें हम बोल सकते हैं कि 73rd Constitutional Amendment Act 1992. ठीक है. तो इसमें granted constitutional status and protection to the Panchayati Raj institutions. ठीक है. पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और प्रोटेक्शन मिला गया. ठीक है. एडेड न्यू पार्ट 9 and also new 11th schedule to the Constitution. ठीक है. और इसमें included 29 functional items. 29 functional items of the पंचायत. ठीक है. 29 functional items of the panchayat. Please write it down.
ठीक है. So 29 functional items to the पंचायत भी add on किया. 73rd के बाद the 74th amendment is also important. That is the 74th Constitutional Amendment Act. और ये 74th Constitutional Amendment Act भी 1992 में हुआ. But this was with regard to the local self-government in rural areas. Sorry, in urban areas. That is, it granted constitutional status and protection to the urban local bodies. ठीक है, एक new part that is 9A and it was titled the municipalities और 12th schedule को लाया गया which had 18 functional items. ठीक है, इसका टाइटल था द म्युनिसिपैलिटीज एंड ऑल्सो एडेड 12th schedule to the constitution containing 18 items. Eighteen subject items of the municipalities. ठीक है, so this is all with regard to the municipality. ठीक है, फिर उसके बाद comes the 77th Constitutional Amendment Act 1995. Now this is with regard to, matlab it provided reservation in promotion, that too in government jobs, for the scheduled caste and scheduled tribe. But later on, this very provision, it was nullified, ठीक है, by the Supreme Court. ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये गलत है. ठीक है, so we can say that 77th provided reservation in promotion in government jobs for scheduled caste and scheduled tribe. ठीक है, but later on सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि this reservation with regard to promotion जो है वो नहीं हो सकता है. Reservation can only be possible in the starting stage of employment. ठीक है, ठीक है. उसके बाद next is 80, that is 80th Constitutional Amendment Act. 80th Constitutional Amendment Act. और ये जो 80th Constitutional Amendment Act था, ये year 2000 में आया था. And what about the 80th Constitutional Amendment Act? Remember it? ये जो 80th Constitutional Amendment Act है, it provided a scheme of alternative devolution of revenue between center and state. मतलब
ऑल्टरनेटिव डेवोल्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। और ये जो अमेंडमेंट था, इट वॉज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 10th फाइनेंस कमीशन। और 10th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन ये था कि जो भी टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम जो सेंट्रल टैक्सेस के द्वारा ऑब्टेन्ड है, आउट ऑफ दैट 29% शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टेट्स। तो इसीलिए ये जो अमेंडमेंट एक्ट है, दैट इज द 80th अमेंडमेंट एक्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड टू द ऑल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं प्रोवाइडेड फॉर an alternative devolution scheme of devolution। क्या है? ऑल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, और इसमें 10th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस को लाया गया था। द एक्ट was enacted to was enacted on the basis of 10th Finance Commission, which recommended that out of the total income from central taxes, 29% must be distributed among the states। 29% जो है, it must be distributed among the states। ठीक है, so this is the 80th Constitutional Amendment Act। Then the very famous Constitutional Amendment Act next is with regard to the 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल। 82nd से भी अगर आप उसको लीव ऑन कर दोगे तो कोई बात नहीं है। वी शुड गो विद द 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड दिस वाज इन द ईयर 2001। और 84th देखो 82nd जो है वो रिजर्वेशन है विथ रिगार्ड टू इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। बट 84th जो है, it's nothing else but it extended the ban on the readjustment of seats in the Lok Sabha and the state legislative assemblies for another 25 years, that is up to 2026। मतलब जो रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स होगा लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, वो 2026 तक नहीं होगा। सो देयर विल बी नो रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स। ठीक है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एनकरेज पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स। दैट मींस तुम्हारा बोला गया कि जो नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा में होंगे और असेंबलीज में होंगे वो रिमेन सेम करेगा टिल 2026। ठीक है, और ये सब 1991 सेंसस के अनुसार हो रहा है। ठीक है, सो इट एक्सटेंडेड the ban on the
adjustment of seats in the Lok Sabha and state legislative assemblies for another 25 years, that is till 2026, जिसमें बोला जा सकता है no change in the number of seats in Lok Sabha and state assembly till 2026. ठीक है, ठीक है, और जो भी रीएडजस्टमेंट एंड रैशनलाइजेशन होगा, इट विल बी according to 1991 census. चलो, that is the 84th Constitutional Amendment Act. 85th Constitutional Amendment Act. This is something which is regarded to consequential seniority. Consequential seniority in the sense कि जब प्रमोशन हो रहा है, ठीक है, then in case of promotion by the virtue of the rule of reservation, when it comes to government servant, that too belonging to the scheduled caste and scheduled tribe, that will be on the basis of consequential seniority. That means यहाँ पे एक नया स्कीम प्रोवाइड किया, that is provided for consequential ठीक है, it provided for consequential seniority in case of promotion by virtue of rule of reservation, by virtue of rule of reservation for government servants belonging to scheduled caste and scheduled tribe. With retrospective effect from June 1995. ठीक है, मतलब कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी वाली बात यहां पे की गई थी. रिमेंबर दैट. Now after that, the very famous is the 86th Constitutional Amendment Act 2002. Right to education, याद होगा, आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हम इसमें बोल सकते हैं कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या किया, एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A बना दिया. इसके अलावा चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ Article 45 of the Directive Principles of State Policy, and also it added a provision, that is 51AK,
to the fundamental duties. मतलब यहां पे made elementary education a fundamental right under Article 21A. पहली बात. दूसरा, changed the subject matter of Article 45 under Directive Principles of State Policy and added a new fundamental duty under Article 51A. और ये सब एजुकेशन से रिलेटेड था. वो न्यू फंडामेंटल ड्यूटी क्या था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी बाय द पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14. ठीक है, तो वो मिलना चाहिए. सो दिस इज 86th Constitutional Amendment Act. Then we can say the 87th Constitutional Amendment Act था. देखो 86 से पहले मैंने यहां पे आपको कहा था ये 84th. इसमें थोड़ा सा एक चीज याद रखना कि जो भी रीएडजस्टमेंट हो रहा है ये एंड रैशनलाइजेशन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब यहां पे याद रखना रीएडजस्टमेंट and rationalization of territorial constituencies in states. ठीक है, in states on the basis of 1991 सेंसस. ठीक है, ये 1991 सेंसस के बेसिस पे था. एंड देन कम्स द 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. और ये 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 पे था. एंड दिस वाज प्रोवाइडेड फॉर readjustment and rationalization of territorial constituencies of the states on the basis of population figure of 2001 census. मतलब अब instead of 1991 census it was to be taken as 2001 census. ठीक है, and not 1991. ठीक है, तो ये चीज था. ठीक है, एंड देन कम्स द 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003. आपको याद होगा कि 1 minute, लेट मी शो यू, देन आपको समझ में आ जाएगा. Yes, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 में एक एस्टैब्लिशमेंट हुआ मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब. नाउ इन दिस
7th 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब था, नाउ इट्स बाइफर्केटेड इनटू टू सेपरेट बॉडीज, that is National Commission for Scheduled Caste under Article 338 and National Commission for Scheduled Tribes under Article 338A. ठीक है, so it bifurcated the National Commission for Scheduled Caste, Scheduled Tribe into two separate bodies. ठीक है, एक था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और दूसरा था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स. ये था आर्टिकल 338 and this was article 338 part A. तो ये चीज था. ठीक है, so we are moving towards the end of the constitutional amendments. अब हम लोग 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करेंगे, 2003. Now, what is so important with regard to the 91st Constitutional Amendment Act 2003? 91st Constitutional Amendment Act 2003 में बोला ये गया कि जो टोटल नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर होंगे in the union cabinet, that will be 15% of the total strength of the Lok Sabha. Plus, it also said that a member of either of the house of the parliament belonging to any political party who is disqualified on the grounds of defection shall also be disqualified to be appointed as a minister. Plus, जो total number of ministers है, including the chief minister in the state, in the council of ministers in the state, it shall not exceed 15% of the total strength of the state legislative assembly of the state. और ये बोला जाता है कि जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर जो है, इट शुड नॉट ऑल्सो बी लेस देन 12. ठीक है, इसके अलावा same thing comes with regard to the state, that is a member of either of the house of the state legislature belonging to any political party who has been disqualified on grounds of defection, ठीक है, shall be not qualified to be appointed as a minister. तो ये सब है. इसके अलावा जो member of either house of the parliament or either house of the state legislature who is belonging to political party and has been disqualified on grounds of defection, ठीक है, उनको रेन्यूमरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट से भी तुम्हारा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. और रेन्यूमरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट का मतलब ये होता है कि द पर्सन इज होल्डिंग एन ऑफिस अंडर द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इज रिसीविंग अ सैलरी फॉर द ऑफिस विच ही इज होल्डिंग. और जो भी सैलरी वो रिसीव कर रहा है वो तुम्हारा यू कैन से पब्लिक रेवेन्यू से उसको दिया जा रहा है. ठीक है, सो दिस इज ऑल देयर विथ रिगार्ड टू, हम बोल सकते हैं कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, तो इसमें जल्दी से लिख लेते हैं. इन शॉर्ट, टोटल नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स including prime minister should not exceed 15% of
total membership of Lok Sabha. 15% of total membership या total strength of Lok Sabha plus member of any house of parliament who has been disqualified on grounds of defection shall not be appointed as minister. ठीक है, shall not be appointed as minister. उसी तरीके से total number of council of ministers including CM not to exceed 15% of total strength in the state legislative assembly. Also not to be less than 12. 12 से कम भी नहीं होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए. ठीक है, इसके अलावा member of either house of state legislature disqualified on grounds of defection, ठीक है, shall not be appointed as a minister. ठीक है, shall not be appointed as a minister. ठीक है, प्लस members of parliament or state legislature of any political party who has been disqualified on grounds of defection, ठीक है, who has been disqualified on grounds of defection shall also be disqualified to hold any remunerative का मतलब सैलरी पोस्ट, remunerative post under union or state government. मतलब कोई remunerative post hold नहीं कर सकता है under the union or the state government. That means जो सैलरी दिया जा रहा है वो पब्लिक रेवेन्यू से दिया जाता है. सो सच अ पर्सन को नहीं किया जा सकता है. ठीक है, इसके अलावा द प्रोविजंस विथ रिगार्ड टू एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, दैट इज बोला जाता है डिस्क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ अ स्प्लिट
by 1/3 of the members of the legislative party. That has been deleted. ठीक है, तो वो चीज है, तो ये चीज मेन है इसमें 91st में. ठीक है, then comes the 92nd Constitutional Amendment Act 2003. 92nd Constitutional Amendment Act 2003. Now four more languages added to 8th schedule. और वो 4 more कौन कौन से है? इट्स बोडो, डोगरी, मैथिली and Santhali, added as scheduled language, and the total is 22. ठीक है, अब ये टोटल क्या हो गया? 22 हो गया. ठीक है, then comes one more 96th Constitutional Amendment Act 2011. Now this 96th Constitutional Amendment Act, it substituted उड़िया as उड़िया. ठीक है, substituted उड़िया as उड़िया. एट शेड्यूल में पहले ओडिया था एज अ शेड्यूल लैंग्वेज, उसको सब्सटीट्यूट करके उड़िया कर दिया गया. ठीक है, देन कम्स द 97th Constitutional Amendment Act 2011. Now this 97th Constitutional Amendment Act 2011, now it's giving constitutional status and protection to cooperative societies. That means पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज है. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज. और इसी में आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 विच टॉक्स अबाउट द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस. तो वहां पे कॉपरेशन को भी इंक्लूड किया गया एज अ फंडामेंटल राइट. प्लस with regard to cooperative societies, a new directive principle of state policy was also added, and we can say part 9B in the constitution titled as cooperative societies. So it gave constitutional status and protection to cooperative societies. It made the right to form cooperative societies as a fundamental right under Article 19. ठीक है, फिर उसके बाद also added an article
in directive principles of state policy with regard to promotion of cooperative societies, or added part 9B entitled as the cooperative society in the Constitution. So this is the 97th Constitutional Amendment Act. ठीक है. Now 99th Constitutional Amendment Act is also very important. 99th. अब क्यों है मैं बता रहा हूं. 99th Constitutional Amendment Act 2014. Now the central government, what it did was that it, matlab, when it comes to the appointment of the judges of the Supreme Court and High Court, there is a collegium system. Now this amendment, it replaced the collegium system of appointing judges of the Supreme Court and High Court, and it replaced it with a new body which was called as the National Judicial Appointment Commission. But later on in 2015, the Supreme Court, it made this act as void because on the grounds of the violation of the basic structure of the Constitution, that is the independence of judiciary. ठीक है. तो इसीलिए तो हम बोल सकते हैं कि it replaced the collegium system of appointing judges of Supreme Court and High Court with a new body called as the National Judicial Appointment Commission, जिसको NJAC बोला जाता है, National Judicial Appointment Commission. But in 2015, the Supreme Court declared this amendment as unconstitutional, as it violated the basic structure, that is independence of judiciary. So now this NJAC is not operative. ठीक है. और बोला जाता है with this the earlier collegium system is operative again. Earlier collegium system जो है, it's operative again. Got it? Let's go with the last two. ये है 100th Constitutional Amendment Act 1000, 100th Constitutional Amendment Act, and this was also in 2014,
And this 100th Constitutional Amendment Act, इसमें Bangladesh and India, they transferred territories between them. That means it gave effect to the acquiring of certain territories by India and transfer of certain other territories to Bangladesh. ठीक है, मतलब ये हुआ था. और इसके लिए amendment, मतलब acts were done with regard to the territories of 4 states. 4 states के territories पे amendments किया गया था. Assam, West Bengal, Meghalaya and Tripura. ठीक है, so we can say that land territories were acquired by India and certain territories were given to Bangladesh. ठीक है, were given to Bangladesh. Also, we can say this act amended the provisions in 4 states, that is Assam, Tripura, West Bengal or Meghalaya. So this act amended the provision in 4 states, ठीक है, in the first schedule of Constitution. So ये जो 100th Constitutional Amendment Act है, ये उसी से related है. And 101 this is with the introduction of GST. ठीक है, introduction of GST, goods and service tax. One India, one tax. All the other taxes, they were indirect taxes जो था वो तुम्हारा खत्म कर दिया गया था. ठीक है, then comes 102nd Constitutional Amendment Act. और ये 102nd Constitutional Amendment Act 2018 में हुआ था. Now this is with regard to reservation. ठीक है, and also we can say that constitutional status and power was given to National Commission for other backward classes. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पावर जो दिया गया था, इट वॉज गिवन टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. ठीक है, and was under India's Ministry of Social Justice, Ministry of
social justice and empowerment. And ठीक है, मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और पावर दिया गया, प्लस इट वाज प्लेस्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और आर्टिकल 338 बी, ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था आफ्टर 338 ए एंड 338, ठीक है, और इसमें आर्टिकल 338 बी इंक्लूडेड, ठीक है. सो दिस इज 102nd. और लास्ट जो सबसे फेमस है, दैट इज द 103rd Constitutional Amendment Act 2019, and this we can say reservation to economically weaker section, reservation to economically weaker section, that is EWS. ठीक है, in public employment. Of 10%. That is, हम बोल सकते हैं आर्टिकल 16 was amended. ठीक है, so these are the very important articles, जो very important constitutional amendments जो हम सबको देखना था. कल के क्लास में भी हम लोग 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक गए थे, एंड टुडे वी कंटिन्यूड फ्रॉम 43rd एंड वी एंडेड टिल 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स. ओके, सो फॉर टुडे वी कम टू एन एंड टू द क्लास, एंड टुमारो विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक. होपफुली वी विल बी स्टार्टिंग विद यूनियन एग्जीक्यूटिव, and or we can start also with union legislature, that is the Lok Sabha and the Rajya Sabha and all. और union executive अगर start करेंगे तो president, prime minister, president, vice president, prime minister and the council of ministers के ऊपर हम लोग बात करेंगे. ठीक है, so thank you all for joining with me on the live class on Drishti Learning app. So this was the class for UGC NET paper 2 political science, and myself Girish Venkatesh. I say thank you to all of you. And once again, I'll tell you, all those students who are there in the live class, you can send your messages on the live chat if you have any of the problems, or else in the weekends you have the interaction session on the Zoom app. So on that interaction session, you can clear up your doubts with me, and you can say जो भी interaction session का जो link है वो आपके कोऑर्डिनेटर्स, आपके ईमेल आईडीज जो आपने दृष्टि आईएएस तक पहुंचाया हुआ है, उस ईमेल आईडी में आपको वो आ जाता है. सो प्लीज रिमेंबर, देयर इज ऑलवेज एन इंटरैक्शन सेशन इन द एंड ऑफ द वीक, दैट इज ऑन सैटरडेज. सो प्लीज डू कनेक्ट on that interaction session if you have doubts regarding any of the topics which we have covered till now. In that interaction session, हम लोग face to face, हम लोग पर्सनल इंटरैक्शन करके आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू ऑल.